topic is this. Since we know that Indian society is highly layered, it is divided on various ideologies such as caste, class, okay, gender. Out of all the stratification of the position, syllabus is this, different topic is this. I would say we know that Indian underprivileged society is sections highly layered, occupies. tribals It is are divided the on various most vulnerable ideologies and such most as caste, oppressed. class, okay, gender. They are more Out of oppressed all than the SCs in India. stratification of the position, which Okay? different, I You would will say, see the question underprivileged always going sections to come, occupies. and Tribals it is are coming the in GS1 most vulnerable and also in most Sociology, oppressed. paper 2. Okay, about They are their more problems and situations. oppressed than, so what should be SCs your in India. approach to understand? First of all, Okay. you should know, you will Demographic see the aspects of question the always tribes. going to come, Okay, and it is coming so in you will, GS1. You are and not also going in to Sociology, read all this point. paper 2, Right now, about their problems and their situations. strength is So what around should be 10 your approach to understand TR? First of Okay, all, this you is should know 2011 demographic census, aspects of 8.6 the total population. Okay, The first point which you so you people have will to remember know is you are their not going strength, to read population all this strength. point. I would be also giving Right all of now, you the content on tribals in India. their PDF, just strength take is out the around 10 PDF because it is really TR. important for Okay, us. this is GS1. So 2011 geographical census, distribution you 8.6 have to of the write total down. population. Okay, so there are The multiple first ways point which where you we people have to tried remember to is understand their the population of population tribes. strength. I would be Okay? also giving Now all of quickly you write the down the content name. on tribals in India. Birja Sarkar. Birraja Sankar Gua. And you can get a question on His classifications of tribals. okay. So this is the PPT which people have to see. So Goas have divided on the basis of geographical region. So north and eastern area, then central India, Indian belt, then zone 3. These are some of the tribes: Khasi, Bhil, Gadai, Dodia, Angami, Horan, Chenchui, Santal, Jarawa. Okay. So whenever question is coming on the tribals, try to make such maps. It really look good. Okay, distribution of tribes. Tribal related question आ गया. Make this map. Okay, because ये map बनाओगे, आपके question में भी आपके answer sheet में variation दिखेगी. Okay, so this is what you will see. The northern and northern eastern zone has its outposts of Simla in the west and the Lusali Hills. The central middle zone includes all this part. Little bit you need to write. So Goa ka classification. Then you have LP Vidyarthi. So he's a sociologist, anthropologist in India. He has given more nuanced classification of tribes. Okay. Now you can write down this part. New classification where he is not only taking the geographical but also economic, ethnic and racial factors. Okay. What he has done, he has explained through this region. So you just have to write the pointers. Goa ने कैसे classification किया, LP विद्यार्थी ने कैसे classification किया. बहुत ज़्यादा deeper में नहीं जाना है. Then you just have to write down this. Racial का, proto-australite, negritos and all. Okay. Then linguistic के base पे classification है. देखो geographical के base पे classification है, linguistic के base पे, racial के base पे. Okay. Then socio-economic factors भी है. पहले आपने देखो linguistic के base पे ये वाला आंसर आ गया, Tibeto-Burman subfamily. This is socio-economic characteristics of populations, right? So you need to see social organization. You can have 5 factors. उनका natural environment बताओ, उनका population बताओ, उनका how they are behaving, material technology कितना use कर रहे हैं, social environments क्या है. तो जितना हम इनको deep study करेंगे, उतना हम इनके problems को sort out कर सकते हैं. अब लेबर कमीशन एक ट्राइबल्स के ऊपर काम किया गया, तो उनके हेल्थ एंड रिलेटेड इश्यूज को लेके, और ऐसे बहुत सारे काम है.
यूपीएससी में सोशियोलॉजी पेपर 2 में डायरेक्टली एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं। एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही है क्योंकि उनका एक पूरा सेक्शन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, सो दे डू स्टडी इट because for a very long period of time it was believed that anthropology is a study of indigenous population. However, it is not the reality. We in anthropology also we study in a holistic manner. Okay, but I do not want to get into that. So this you people have to understand. ठीक है, social organization and all. तो इस PPT में से आप for example you can see 1953 TC दास. अब आपका ट्राइबल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, आपने यही रेफरेंस दे दिया. I suggested that the tribal organization reveals 7 types of social organization. TC does in this explanation via flowchart. अब tribals में deeper answer लिखोगे, ठीक है? Then SC Dubey, that what they have said with respect to their classification. So you will see social organization में common name होता है जैसे Naga tribes. Okay, so the expression Naga is a common term to denote the Nagaland people. बट नागालैंड में भी डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं, एथनिक ट्राइब्स, उनके कल्चर डिफरेंट है. ओके, देन द फैमिली. तो फैमिली कैन बी पेट्रीलोकल, मतलब फादर के यहीं रहना है. पेट्रियार्कल, फादर का रूल चलेगा. पेट्रीलिनियर, इनहेरिटेंस फादर टू सन जाएगा. एंड पेट्रीनिमिक, जो सरनेम है वो भी फादर का रहेगा. ठीक है, तो दोनों है, पेट्रियार्कल भी है, मेट्रियार्कल भी है. ओके, देन यू कैन सी हियर the Khazas practice polyandry, like polygamy, multiple marriages. Okay, the Tharus follow the rule of patrilineal, but the position of women is strong among them as they command the family. Okay, so you will see even you will find the tribal, like any community, and they are patriarchal in nature. They are not going to be patriarchal as North Indians mainstream patriarchy is. Okay, वहाँ पे ऐसे नहीं होता है कहीं भी ट्राइब्स में. तो अगर हस्बैंड मारता है पेट्रार्की होने के बाद भी, तो वाइफ भी मारती है पलट के. वैसे अब तो ये हर जगह देखने को मिलता है. इट इज नॉट एट ऑल इन द ट्राइब्स. ओके, सो इट्स एवरीवेयर, राइट? सो इट इज एवरीवेयर. यू विल सी, आई विल नॉट से, आई हैव सीन फीमेल्स हिटिंग देयर हस्बैंड्स लाइक एनीथिंग. अच्छा करती है, पिटना क्यों है, पीटो भी, बट बी सेफ, क्योंकि अल्टीमेटली मर भी सकते हो आप, क्योंकि फिजिकली तो स्ट्रेंथ मर्द की ज्यादा होती है. तो औरतों को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, ऐसे वर्ब फाइट्स में नहीं आना चाहिए. So I have seen lot many couples where females are fighting. I also had a separation. No, I also had a separation. You do not have. You need to be emotionally intelligent. You need to be rational. Okay. Victim act very good. इसलिए मैं तुमसे impress हूँ. Females who actually, do this in fights, where they are in, what they are doing? They are instigating males to hit them. They are doing deliberately in their head. They want to portray to the police about the victim का. बिल्कुल सच बात है ये. This is what had been told to me, where lot many females have told me, because जब मैं research कर रही थी, so I was also looking the domestic violence. Okay, so these people, so all these females are very shrewd nowadays. They know that अब हमारा राज है at least laws के लिए. वो अच्छा भी है, वरना उनको protect कौन करेगा, right? So I also used to have lot of spat, and my ex-husband is 6'1", basketball player, good, well built. Why will I do that? I never had physical, thing. कभी मैंने कभी ऐसे fight नहीं करी है. Why? Because he would have been in trouble. It's easy, females has a very sharp tongue. They fight, और वो किसी को भी रुला सकती है अपनी बातों से, है ना? ये सच है. अब आप इस फाइट पे आ रहे हो एंड मेल आर एग्रेसिव, वो हाथ उठाएगा. इस डायनामिक्स का यूज दोनों गलत वे में करते हैं. मेल ऑल्सो डू के कि ये तो पिट जाएगी, पिटो. फीमेल ऑल्सो, no, sharp shrewd females do that. तो मिडिल क्लास फीमेल होती है that they do that. लोअर फीमेल क्लास जो होंगी वो डोमेस्टिक वायलेंस में उसका रोज पिटेंगी, वो भी पिटेंगी, वो भी पिटेंगी. वो उनको पता आएगा मारेगा, तो वो काम पे जाएंगी. वो पुलिस तक की नहीं जाती है.
नो नो नो, ये है सच है ये। आप लोअर क्लास में जाओगे, दे नो कि ये पी के आएगा, बदतमीजी करेगा, ये पीटे पाटेगा, तो भाई चलो, दे नो कि पुलिस करेगी भी क्या उनके फाइट्स का। पुलिस किसकी फाइट्स का करेगी? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का। वो फाइट, वो लव फाइट्स अलग की बात कर रही हूँ मैं। प्लीज गेट इनटू इट, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर। इवन कोई ट्राइबल फैमिली फुली अपने आप को पेट्रियार्कल कह रही है, तो भी मेट्रियार्की उसमें दिखेगी। ठीक है, अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, आई एम जस्ट एसोसिएटिंग दिस पॉइंट विद सो मेनी अदर इश्यूज। Nowadays, so-called middle class or upper middle class women, they are doing it deliberately to torture males. तभी तो अब ये बातें उठ रही है कि males are doing suicides and this and that. Okay, तो ये what he has said is partially correct. Partially correct. They are doing it. वो deliberately कर रही है कि देखो इसने मुझे ऐसे टॉर्चर करा, ये मारा, ये करा, वो करा, अब डिवोर्स फाइल करूंगी, ये करूंगी, वो अपनी प्रॉपर्टी ला दे सारी, तेरी माँ, तेरे घर, ये सब सब बर्बाद, यू नो। वो नो वी डू इट वेरी चीप। आप बहुत प्यार से रिस्पेक्टफुली भी अलग हो सकते हो। कोई आपको यू नो हु आर गोइंग टू डू दैट, जिनको लालच होगा। आई एम स्टिल फाइटिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ माई डॉटर्स का खर्चा। सो फुलिश, ही इज नॉट गिविंग। मैं सोचती हूँ कि क्या बेवकूफ इंसान है। ओके, बिकॉज यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। व्हाई यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन? वो बेटी का राइट है, वो मिले। आई वुड से अगर आप पढ़े लिखे हो और आप काम कर रहे हो, तो लड़की वाइफ को मेंटेनेंस और ये सब के लिए इतना लड़ना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट उनकी भी अलग केस होती है। विल डिस्कस इट फैमिली मैरिज किनशिप में। डिवोर्स जो कंटेम्प्रेरी थिंग है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। बट ट्राइब्स में ऐसा नहीं है, ट्राइबल्स लोगों में ऐसा नहीं है। ट्राइबल्स में फीमेल्स आर पावरफुल, अगर वो कितनी भी पेट्रियार्की है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे ट्राइब्स का। एंड यू विल सी द ऑल point. Now the political organization. What will be the political organization? There will be a final authority. There will be a headman. जल्दी जल्दी लिखो. Political organization. There will be a headman, final authority. Okay. Who would be controlling the community. तो यहाँ से आपने एक थोड़ा सा political organization के बारे में सोच लेना है। ये दिस इज लाइक यूपीएससी का आंसर में आया था ये क्वेश्चन। The village community has some social control over its people. Among all the tribes, there are a number of negative sanctions that follow misconduct. यहाँ पे actually laws से है। Mainstream, this is you can relate. ये तो यूपीएससी में आया था डायरेक्टली, इसी कंटेंट में से आया था। मेरी पीपीटी है हाँ ट्राइब्स का, उसमें आप इसको कंटेंट कर सकते हो। इमाइल डरखाइम का मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी लॉ वाला, रिप्रेसिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लॉज। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ गए। गांव में ट्राइब्स में आप सैंक्शंस के थ्रू कंट्रोल करते हो, शहरों में फॉर्मल सेक्टर्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ऐसे ऐड कर लेना। दैट्स इट। तो हु इज द पॉलिटिकल हेड, देन यू कैन अंडरस्टैंड देयर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज रिलीजियस बिलीफ? एनिमिज्म, सुपरनैचुरल थिंग में वो बिलीव करते हैं। जब हम रिलीजन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दे बिलीव इन नेचर। ओके, so what is their belief with respect to the god? Animism. Animism is a concept, write down. Animism is a concept given to us by Edward Bernard Taylor. That talks about Edward Bernard Taylor, that talks about there is a supernatural power who is controlling the nature and so on. Okay, so this is some of the beliefs. Animism, animism. I would suggest बस इतना ही लिख लेना, that is more than enough. Then the economic organization, they are still hunter and food gatherer. They are pastoralists also. They are some of them are
इन्वॉल्व इन आर्टिशन एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ से आपने उनका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया। मेन जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो प्रॉब्लम्स में आएंगे, प्रॉब्लम्स, ओके। So the tribal communities are following, they are experiencing these problems: land alienation, poverty, indebtedness, low literacy, poor educational facilities, unemployment and underemployment, health and nutrition, ठीक है। So land alienation, you would see 80% of tribals in India practice agriculture shifting and mud and settled cultivation. Alienated land is that which has been acquired from customary landowners by the government either for its own use or for private development. ठीक है, तो लैंड एलियनेशन, उनसे उनकी जमीनें ले ली जाती है, ओके। तो दिस इज अ लैंड एलियनेशन। अब उनका तो डिपेंडेंट उनके लैंड पे ही है, तो अब क्या आएगा, प्रॉब्लम होगा। तो द लैंड होल्डिंग अपीयर्स बिगर इन साइज, बट कभी कभी उसका कोई यूज नहीं है, ओके। तो यू विल से कि लैंड ओनरशिप अगेन belongs fell into the three categories. इतना आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, बस ये समझना लैंड एलियनेशन इज द मेजर प्रॉब्लम, ओके। तो क्यों, रीजन क्या है लैंड एलियनेशन का? दे नीड कैश for purposes like marriages, fairs, festivals, clothing. It is a resultant of cultural contact. गांव के लोगों से ट्राइब्स के लोग मिलते हैं, फिर वो उनका कल्चर फॉलो करने लगते हैं, तो वो भी शादी ब्याह में स्पेंड करने लगे हैं। अब उनको भी शो ऑफ करना है, फालतू का लोगों को बुलाना है और ये सारी चीजें करनी है। आई मीन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी सेंसिबल इंसान शादी जैसी चीज में पैसा खर्चा करता है, मेरे हिसाब से बहुत बेवकूफ है। I did simple nikah in my drawing room. Court marriage is fine. Okay. Yes. Even if you want to have little party, call your family members, book one small place and do destination wedding. ठीक है। Anyway, अब क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये लोग भी मैरिजेस के लिए पैसा खर्च करवाते कि भाई आप पैसा लो, ओके। अब सोचो ट्राइबल्स लोग, उनको भी पैसे खर्च करने हैं, राइट। सो वर्बल कमिटमेंट्स और टफ इंप्रेशन ऑन लैंड। अब क्या होता है, इन लोगों से जो बीच के मनी लेंडर्स होते हैं पैसा देते थे जल्दी जल्दी, और उनसे क्या करते हैं, उनसे जमीनें छीन लेते हैं बाय ट्रिकिंग देम। ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर करा दिया, दिस एंड दैट, ठीक है। तो ट्राइबल सरेंडर्स मोस्ट ऑफ देयर लैंड टू ओपोनेंट्स ड्यू टू वेल इंजीनियर्ड टैक्टिक्स एम्प्लॉयड बाय लैंडलॉर्ड्स, ओके। तो लैंड एलियनेशन एक प्रॉब्लम हो गया। फिर यहाँ पे अगर आप ये केसेस स्टडी दे दोगे अपने आंसर में, देन यू कैन ऐड वेरी गुड कंटेंट, ओके। तो केस स्टडी जरूर देना है। फिर उसके बाद लैंड एलियनेशन का रेमेडीज क्या है, ओके, लॉज, इग्नोरेंस ऑफ द ट्राइबल पीपल, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स एंड सो ऑन, ओके। इज दिस क्लियर? ट्राइबल्स का इसमें कोई थ्योरी नहीं है। देन पॉवर्टी, पॉवर्टी तो मेजर प्रॉब्लम है ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्रोनिक पॉवर्टी। क्रोनिक पॉवर्टी का मतलब ये काफी टाइम से वो कभी जा ही नहीं रही है। जब से हमारी ये दुनिया है, ट्राइबल्स के लोग पॉवर्टी के अंदर ही है। हाँ, कुछ बिकॉज ऑफ, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिकॉज ऑफ आई वुड से अम्बेडकर जी एंड द पीपल हु प्रोटेस्टेड। एससी एंड एसटीज में जैसे खासी ट्राइब्स काफी अब अच्छे हो गए, और बहुत सारे ट्राइब्स दे आर इनटू अ वेरी गुड पोजीशन। तो कुछ ट्राइब्स का तो भला हुआ है, कुछ कम्युनिटीज का भला हुआ है, बट वो भी बहुत ही मार्जिनल है, बहुत कम है, ठीक है, वो इंप्रेसिव नहीं है, ओके। सो पॉवर्टी का प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपने पॉवर्टी पढ़ना है। तो पॉवर्टी की रीजन, जहां जहां ये नाम दिख रहे हैं ना आपको इस पीपीटी में, इट्स नॉट वर्किंग। जहां जहां ये नाम दिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर बीटी शर्मा, वो जरूर अपने नोट्स में बनाना है। इनफैक्ट इस पीपीटी का मतलब ही यही है कि जहां जहां मैंने कुछ मार्क किया हुआ है वो कॉपी करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम तो आप सभी को पता होगा, सो बेसिक। देन इंडेटनेस, इंडेटनेस का रीजन, ओके, इलिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स, फॉर्मल एजुकेशन, ये सब जरूर लिखना है। अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, दास एंड बनर्जी की स्टडी, हेल्थ इश्यूज। अब जैसे यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था सोशियोलॉजी में, लेबर कमीशन,
Okay, and most of the aspirants could not write. पढ़ा ही नहीं था ऐसा. So Hansen's disease tuberculosis is also quite common across tribes of India. So according to Devar Commission, there is a shortfall. तो जो केस स्टडीज आ रही है वो लिखना है. ओके, so this is done. ये क्वेश्चन भी आ सकता है अब आपको. Developmental projects and their impact on tribal displacement and problem of rehabilitation or development of forest policy, impact of urbanization and industrialization of the population. इस पे भी कंटेंट आ सकता है. ठीक है, तो एक ही पीपीटी करनी है आप लोगों ने. As it is, you people can take out the printouts and learn. And I am providing you some more PPTs on this. मतलब you people just have to read once. एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा. बट अगर आपने थिंकर्स के नाम नहीं लिखे, केस स्टडीज नहीं लिखा, और you need to talk in terms of social stratification. ट्राइबल्स का क्वेश्चन आया, आप स्टार्ट करो. In the sociology of stratification, sociologists argue that these tribes are the most vulnerable. Okay, and within the tribes, we also have particularly vulnerable tribal groups. So in order to have equality, social equality, one must, the holistic development in any society can happen if there is a tribal integration. समझ में आया? तो अब क्या हो गया, आंसर आपका सोशियोलॉजिकल बन गया है. Now the next topic is problems of exploitation and deprivation of scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes, constitutional safeguards, and scheduled tribes and scheduled castes. ठीक है? तो problems तो हमको पता ही है. The term scheduled caste appeared for the first time in the Government of India Act 1935. In 1936, the British government issued the Government of India, and all these parts tribal scheduled castes. The term origin Dalit is also commonly used for non-official purposes. So, socio-economic problem, the idea of ritual purity pollution has been manifested through untouchability. The entire segment of population was assigned occupation like scavenging, tanning, etc. एक untouchability का भी concept है जो आपका caste के ऊपर next था, वो मैं बाद में कराऊंगी. Okay, they have been barred, मतलब I will give you content. Okay, so in an agrarian society where all powers emanated from the ownership of land. So you will see, you may think that I'm not very much explaining, I'm just telling you the PPTs. वही actually required है. Why do you have to waste your time? Okay, so you just have to quickly understand कि जल्दी से इसका प्रॉब्लम समझना है, एससी का प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स याद करने हैं. आपको शायद हो सकता है क्वेश्चंस भी आ जाए. In spite of the constitutional safeguards, still there is a deprivation and problems among this community. Why? तब अगर constitutional safeguards पूछ लिया तो आपको लिखना भी पड़ेगा, वो आप याद कर लो, but not the way you are reading for the polity. ओके, सिंपल, बस इतना ही याद करना है कि ये सारे हैं. कुछ बच्चे इस आर्टिकल को डिफाइन भी करने लगते हैं, वो नहीं करना है. बस आर्टिकल 15, 29, 46 बस याद कर लो, उसके एसेंस बता दो. then the schemes you will can see here. then OBC का प्रॉब्लम. ओके, जैसे ओबीसी का मंडल कमीशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज राइट डाउन. क्रीमी लेयर पे क्वेश्चन आया हुआ है. ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है.
non-Hindu communities. So caste system in non-Hindu communities like Muslims, Sikhs. Clear है? ठीक है? Go through these PPTs. OBC Muslims, constitutional safeguards, STs, their problems, classification. Write down particularly vulnerable tribal groups. इसमें क्वेश्चन आता है National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation. This corporation was incorporated as a government company under Ministry of Tribal Affairs and granted license under Section 25 of the companies. Okay. So National Scheduled Tribes Finance to generate evidence among the STs about its concessional scheme to provide assistance through skill development. So particularly vulnerable tribal groups are the most vulnerable and oppressed. Okay. तो इसके ऊपर एक शॉर्ट आंसर जरूर बना लेना आप लोग, ठीक है? आई विल गिव यू मोर कंटेंट ऑन दिस. उसके बाद दिस टॉपिक प्लीज राइट डाउन social change and contemporary tribal societies, impact of modern democratic institutions, development programs and welfare measures of tribals and weaker sections. तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिल्ट तो होगा करंट अफेयर्स की तरफ. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, बस वो आपको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लिखना है. ये जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज, वो उनके प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ही बात करनी है, बट आपके टर्म्स सोशियोलॉजिकल होना चाहिए. इनइक्वालिटी ला रहे हैं, डेप्रिवेशन है, इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग सॉलिडारिटी. ओके, सो देयर इज अ डिसफंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम. कंक्लूजन जब लिख रहे हो, so there is a dysfunctionality of a system if one of the section is left behind. Okay, and often these particularly vulnerable tribal groups get deviant as per Imal Durkheim's views. For instance, the tribals demanding their separate region. तो आप ये प्रॉब्लम बताते रहे हो लेकिन आप उसमें अप्लाई क्या कर रहे हो? डरखाइम. एक्सप्लॉयटेशन की बात तो कर रहे हो लेकिन कार्ल मार्क्स. मल्टीपल मीनिंग समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मल्टीपल वे में ये डिप्राइव्ड है, इनकी लाइफ सिचुएशंस कम है. as per Max Weber, the life situations of tribals are less. तो अभी क्या करना है, आज की क्लास में ये सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट देखना है. नेक्स्ट क्लास में आई वुड बी ब्रिंगिंग सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. ये ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो लिखना कैसे है. ओके, पहले उसके लिए आपके पास ट्राइब्स का कंटेंट तो होना चाहिए. ठीक है, तो आप लोग ये सब पढ़ोगे. 2 दिन है आपके पास पूरा, गेट थ्रू दिस. ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक है और आ भी सकता है, इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी अमंग ट्राइब्स. क्योंकि क्रिश्चियनिटी, देखो अगर कोई ट्राइबल ग्रुप, अब कोई भी ट्राइबल ग्रुप अगर हिंदुइज्म एक्सेप्ट करता है तो दैट इज नेचुरल, बट इफ दे आर एक्सेप्टिंग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, it is something like then there is some planning and plotting. Maybe some foreign funding is going happening over there so that they are going to accept the new religion. Okay, तो ये problematic है. तो अभी इंडिया में एक प्रॉब्लम चल रहा है, most of the tribes are converting into Christians. So it's a maybe foreign agendas or Christian missionaries agendas to disturb the balance or diversities in India. Okay, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना है. तो एक और पीपीटी आप लोगों को मिलेगी.
So what right now I'm doing, I am just telling you the right approach to deal with tribals. Okay, first of all, get the content, and then you people have to read in a sociological manner. That is why what aspirants ended up doing, they will just write the social problems. They will write not in a sociological context. तो ये तो आपका बस अभी बेस होना चाहिए. For example, this impact of Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam, and other religions on tribal societies. So you must have read it. कि इसका impact क्या है? So read through it. You will see about this. So tribal India is not monolithic in terms of religious also. So because of acculturation, they are accepting more and more religion. Who has argued that tribals should be considered as backward Hindus? My question to all of you. Gure. Okay, so Gure have argued this. So this part, okay, that's it. And then you can just talk about development. One more PPT. So what is the role of anthropologists or sociologists in bringing development to their problems? Development policies, tribal displacements, and problems of, let me just show you this PPT. Yes. So now this development policies and tribal displacement and problems of rehabilitation. So history of administration of tribal areas, tribal policies, tribal development and their implementation, the concept of primitive tribal groups, distribution of special program, role of NGOs. तो एक ये वाला टॉपिक भी आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है. ब्रिटिश पॉलिसीज क्या रही थी वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को समझना होगा, ठीक है. सो रोल ऑफ, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है, आप सोशियोलॉजी भी लिख सकते हो, इट विल नॉट बी रॉन्ग. ओके, इज दिस क्लियर? So go through this PPT first of all, and then you people have to see this topic, contribution of anthropology to understanding regional tourism, ethical and political problems. So it is not just going to be anthropology, because you talk about tribals, so you are just doing anthropology and sociology both. So in this way, what happened? You have divided tribal communities' problems in sections. Okay. So first of all, when you will study, you will know exact problems and you have enough content to address their problem. Now, how you are going to write? If a question is going to come, discuss the major problems of tribal communities, you cannot just write in one manner. You also have to bring the gender dimensions. Okay, you also talk about development projects, but all has to be highly critical thinking. तो पहले इस टॉपिक के लिए you people have to study, okay, tribal communities, geographical location, and then you need to work on probable questions in such topics. Now the coming topics, whatever I am going to bring in class, you people have to think of probable questions, that okay, in tribes we can get a question. Question may appear at a surface level that it is of current affairs. You will end up writing current affairs, वो लिखना नहीं है. ट्राइबल का प्रॉब्लम आया, अगर इंडेटनेस का आया, ठीक है, तो आप इंडेटनेस नहीं बता दोगे, आप केस स्टडीज बताओ क्या यहाँ प्रॉब्लम है, बट उसको सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. आपके आंसर में सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब्स दिखना चाहिए, आपके आंसर में सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन दिखना चाहिए, सोशल प्रॉब्लम दिखना चाहिए, सॉल्यूशन, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, स्ट्रैटिफिकेशन, द कॉन्सेप्ट्स यूज. Is this clear? Okay. So I would only suggest to all of you, once you people have read this topic, get lot of practices with respect to coming topics on daily basis. For example, you have read it, take the pointers, now make the questions and write it. Because maybe the question would come for the child labor. Okay, child labor भी अभी एक problems आप discuss करोगे social changes में. But
how you are going to discuss the child labor? Let me just explain this. So there is a topic in your paper 2 with respect to child labor and slum and all. Okay. Now you already know, Kanika. Okay, I have told you in the beginning. You need to understand child labor, that how it is a failure of governance. So when you will talk about failure of governance, because it's a poverty not handling really well. So for their survival, they have to work. So not you will see that not every orphan is going to get into orphanage. So he will work in informal sector. So once he will work in informal sector, what happen? He will be exposed to the wrong groups and he may get thrown into the crimes, and then what happen? He will be committing crimes, and then he can quote Nirbhaya case. Okay, so what is happening? You may think that it is an individual problem. Child labor is an individual problem. It's a family issue. No, it is a structural problem. So when you are saying it's a structural problem, then you will quote Sirut Mills. Okay, and so this is how one should talk about child labor. You need to quote thinkers. There is Amartya Sen, who is also talking the same, that why we are getting fall into such problems. Okay, so you need to know that you may think that it's a general question, general knowledge, general science का question है. Child labor is a general social problem, but you need to write in a sociological perspective. Okay, with respect to slum also. So that is really very important. Okay, so what is going to happen? What I am going to do here is that with respect to the tribes, on Monday wala class, I will explain that how you people have to write it down. Okay, I would be just giving you explanation on all the topics that okay, this is how you people have to read, and then I would be giving you content, question and answers. Okay, you take those notes and print it out and learn it and write it down, because this is the only fixed and proved way to get good marks in paper 2. आपको चाइल्ड लेबर की तरह लिखना ही नहीं है जो कि आप GS 1 में लिख दोगे. आपको कोट करना होगा, थिंकर्स को भी कोट करना होगा, उसमें सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी लिखना होगा. ठीक है? एनी क्वेश्चंस?